Sit down, sit down. Sit down, all of you. Where did we stop last class? Yeah. What is the doubt? We don't what? Changing category. Conservation of energy. It is just conservation of energy, nothing else. So, what is the kinetic energy here? It is same as whatever was the potential energy here. Okay. What is the potential energy here? U2. Okay. Height is given, so you can find U1 and U2. Okay. That's it. U2 from U1. So U1 is greater. That's the thing. Conservation of energy. Okay, where did we stop last class? We completed the second unit, right? Yes. We completed that. So where did we stop? Out there.
So there are three characteristics of sound. Let us say loudness, pitch, and quality. Right? Why do we need characteristics of sound? To distinguish between different sounds. So different sounds are different on the basis of their loudness, pitch, and quality. So loudness depends on what? Loudness depends on. मेरा वेट करते रहता है क्या? ऑपरेटर बना के रखा है. कौन सा है ये? Amplitude. Loudness depends on amplitude. You want this pen or shall I switch off? This one. Switch off. Loudness depends on. You want this. This is pretty slow. Okay. The loudness depends on amplitude. What about pitch? Pitch depends on frequency. Did we discuss pitch or no? We did? Okay. Okay, so it depends on frequency. So we have to identify the objective and subjective property. So in case of loudness, what is the objective property and what is the subjective property? First of all, what is the difference between objective and subjective property? Subjective is experience based. Objective is measurement based. Objective property can be exactly measured and it is unique for a sound of given loudness. Whereas the same sound can be interpreted differently by different listeners. Sound of same loudness may appear feeble to some and pretty loud to some others. Depends on the sensitivity of the ear. So it is experience based. So such properties are called subjective property. When it changes from person to person, this is their experience. Whereas the measurement, the technical measurement is same for a given sound. Is that clear? So what is the objective property of loudness? Intensity. How our loudness is measured? It is measured in terms of intensity. So what is intensity? How was it defined? Intensity was defined as energy, sound energy flowing per unit area per unit time. Okay, the intensity is energy flowing per unit area per unit time. Now you can express it as power flowing per unit area. So these are the formulas for intensity. Okay, is that clear? So the objective property of loudness is intensity. Okay, so when I'm speaking, so if you take this as unit area, 1 meter by 1 meter, how much sound energy is passing every second through that area? That becomes the intensity of sound produced by me. Okay, so that is measured by intensity. Okay, so did we graphically discuss this? Graph बना के discuss किया था? No? Okay, let's discuss. We discuss it graphically. Great discussion. Discuss here. Okay. So this was already discussed. Let's start with pitch. So pitch is a subjective property. Okay. It depends on frequency. And frequency is the objective property. Okay. So in case of pitch and frequency is the objective. It can be technically measured. How can you measure it?
How can you measure the frequency of a sound? How can you measure a frequency of a sound? So how can you measure that? What is the device? You convert sound into equivalent electric signal. So when you speak in front of mic, sound energy is converted into electric signal that is given to oscilloscope, and then oscilloscope will generate waveform, right? So let us say I generate waveform for two sounds. Let's say this is sound one and this is the waveform. The y-axis could be voltage or current. Okay, anything, volt or current. Now what do we have? This could be voltage or current, or it could be displacement also. Which frequency is higher? Second. So this is F1, this is F2. What is F2? 2 times F1. Correct? See the time period. Time period is same. Okay? For one cycle of this is T1, right? How many cycles you are getting? T2. Okay? So the time period for the second one is shorter. So frequency will be more, 1 by 2. Correct? So experience wise, did I give you the demonstration of frequency, which is high pitch and which is low pitch sound? If you take musical instrument, what instrument has high frequency and which one has low frequency? Let's take the strings of guitar. Okay? So everybody is familiar, it carries multiple strings. And the string, the thickness is different. Huh? So the one which is thick, its frequency is high or low? A guitar with a string, okay, of a higher thickness. What will be its frequency? Higher or lower? Lower. Said that? Correct, bola. So why? Because what is the frequency given as? This is how the frequency is given of the stretch string. I gave you this formula, right? So this is the radius of the string. More the radius, that means thicker the string, lesser the frequency. ठीक है ना? ये हो गया. या फिर it also varies with tension. By keeping other things constant, you can vary one thing. So length is constant because it is fixed between, it is tied between the two ends. So this is how you can vary the frequency. Is that clear? So how does high frequency and low frequency sound? सुनने में कैसा लगता है? Low frequency. अगर हम मेल और फीमेल वॉइस कंपेयर करें, किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, मेल का या फीमेल का? फीमेल फ्रीक्वेंसी इज हायर. So higher frequency is more piercing. Okay? And lesser frequency is, yeah, I mean, this is not a remark like biased remark, but that's the fact. So high frequency is more piercing, and low frequency is flat. It's a flat. So male voice is flat, whereas female voice is shrill. It is called flat and shrill. Voice has low frequency. Yes. Ready?
Okay, so in musical instruments, so are you familiar with tabla? So it has two units, one with a bigger diameter and one with a smaller diameter. So which one has more frequency? Bigger वाला या हाँ जो थप थप करता है उसका smaller frequency. That is a flat voice. तो बड़ा वाला है. और जो छोटा वाला में तो क्या कहते हैं ठंड ठंड ना आया वो ज़्यादा sharp हो. So that is how. और वैसे ही जो lower frequency उसको हम क्या बोलते हैं? Musical instrument में it is called bass. Bass या bass क्या बोलते हैं? Bass and treble. ठीक है? So if you want to enhance the effect of sitar or flute, then you have to set it on treble. You have to increase the treble. But if you want to hear the drums, then you have to tune it for bass set. Bass or bass, क्या बोलते हैं? Bass. You have to increase the bass. Then you will hear the percussion instruments more. Okay? अगर high frequency सुनना है तो treble. समझ आ गया? So what is the objective property here? Frequency. For a given sound, right? Its frequency is measured, let us say. But when you are hearing it, depending upon the sensitivity of the ear, you may find it piercing or you may not. So sensitivity or experience. So this becomes a subjective property. Clear now? There's the difference between pitch and what's frequency and pitch. That relation is understood. Now let us learn about quality. So between loudness and pitch, we differentiated the sounds basis their amplitude and number of cycles or frequency. And will they, in case of two sounds, one is louder than the other, both sounds you will hear, like you will recognize what is the source. It is the same source. In one case he is shouting, and in the other case he is speaking feebly. यार कॉन्फ्रेंस चल रहा है. So दो लाउड साउंड में ठीक है एक जैसे ही समझ में आएगा कि who is speaking, same person speaking, louder or not so loud. Okay, but frequency में the sound will appear different. One sound has one unique frequency. ठीक है? If two people are speaking, their sound will never be alike because they have different frequency. So here, even if they are speaking at the same loudness level, here the level is same. See the amplitude. Both are at the same level, yet you will hear different sounds. So what is the identity of sound? Its frequency. Okay. Now what if you have two sounds of same level, okay, and same frequency. Mind you, you have two sounds of same level and same frequency, yet you hear them differently. Is that possible? When the waveform is different. That means the sources may be different. Like she is speaking and she is speaking at the same level of sound and with the same speed they are speaking, yet you can identify that two different sources are speaking. So when the source is different, okay, quality is used to differentiate. It is used to differentiate amongst sound of same level and same frequency. However, originating from
different sources. Okay. Let's say the guitar and a sitar. Guitar and sitar, for example. Okay. So in a musical orchestra, there are different instruments being played. All of them are played in harmony, meaning at the same level and at same frequency. Yet you can identify that the sources are different, and each source is producing unique sound. Because what is different here? They have different waveforms, thus having different waveforms. Waveforms. Okay, so they have different waveforms. Where is the view? Here. Can we not increase it? Yes. Okay. So, attendance. Rihan, अभी तो था यार. Rihan and Priyanshi, are they online? Yes, sir, I'm present. Okay, ठीक. Hello. बोलो hello. Okay. So having different waveforms. तो अभी waveform कैसा दिखेगा? देखो. एक का waveform समझो ऐसा दिखेगा. दूसरे का waveform कैसा दिख रहा है? One is a sinusoidal wave, the other one is triangular wave. ठीक है? तो भले दोनों का waveform अलग दिख रहा है, लेकिन if you measure the amplitude, दोनों का amplitude same है, दोनों का number of cycles per second भी same ही, time period दोनों का same. देखो, इतने टाइम में यहाँ पे एक वेव बन रहा है, बस छोटा हो गया. तो दोनों का एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी सेम है, बट स्टिल दे विल बी हर्ड डिफरेंटली बिकॉज देयर सोर्सेज आर डिफरेंट, दे आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. So you can discriminate between sound even without looking at the source by its quality. Okay? So with experience you'll be able to differentiate. So what is subjective and what is objective here? In quality, what is the subjective and what is objective property? Quality is subjective, okay? Whereas waveform is objective. क्योंकि क्वालिटी भी अलग अलग लोगों को अभी भी अलग अलग ही समझ में आएगा. So quality is perception based, whereas waveforms can be exactly measured with the help of gadgets. Is that clear? So that's what it is. Okay. Now,
So how do you measure sound? Okay, so unit of sound. Sound. Yes. Okay. Unit of sound loudness is Thon, THON, and loudness is expressed as is equal to loudness is directly proportional to log of K log and K. This is the relation between loudness of sound and its intensity. Okay, loudness is directly proportional to logarithm of intensity of sound. Okay. Then there is something called as level. So ठीक है तो इसको L0 L1 तो अगर हमने दो साउंड लेवल लिए where I0 is the intensity of the smallest possible audible sound like a drop of a pin इसको हम कौन सा लेवल बोलेंगे level 0 ठीक है this is the where I0 is intensity of smallest or least audible sound audible sound ठीक है so I1 is ठीक है so this is the relation between the loudness and intensity of sound अभी ये तुमको इस पे कोई न्यूमेरिकल नहीं है ठीक है this is I am telling you just to tell you the unit of sound so the difference in the level like let us say the intensity increases by 100 times energy of the sound increases by 100 times then it will appear only twice of this log of 100 is 2 ठीक है मतलब there is no linear increase बहुत sound increase होगा तब जाके loudness double होगा it's not linear scale it's logarithmic scale मतलब अभी तुम थोड़ा थोड़ा चिल्ला रहे हो मान लो तुम्हारा ये है loudness कितना है L0 बहुत ज्यादा चिल्लाने लगोगे मतलब जितना चिल्ला रहे हो तो उसका 10 टाइम्स चिल्ला रहे हो या उसका 100 टाइम्स चिल्लाओगे तब loudness डबल होगी ठीक है तो डिफरेंस इन द लेवल तो साउंड लेवल को हम कैसे करते हैं साउंड लेवल इज इक्वल टू L1 minus L0 यस सो साउंड लेवल ये जो डिफरेंस लोएस्ट ऑडिबल से जो नेक्स्ट है जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं साउंड लेवल एंड साउंड लेवल इज मेजर्ड in decibel what is it called decibels okay it is called decibel ठीक है it is called decibel so what is 0 decibel so 0 decibel corresponds to pin drop
What is 0 decibel? It is the sound corresponding to sound produced by a pin drop. That's the lowest audible sound. Then when the wind blows and the leaves, rub against each other, that sound. Okay, that is 10 decibel, I guess. Anybody else, Selina? What's the next one? See the sound table. 0 decibel is 0 decibel. Dropping of the pin. Then what is the next sound? Rustling. Rustling. Yes. What is the sound? 10. 10 decibel. So even that is not a very loud sound, right? It is rustling of leaf. Okay? So kahan to pin drop hai, that's a very small sound. And the next sound is rustling of sound. That is about 10 decibel. And what is the sound corresponding to the ambulance? What is the sound corresponding to ambulance? What is the sound corresponding to police cars and 120? Again, 120 decibel will be a very, very big sound. Any sound bigger than 120 decibel qualifies for sound pollution. So 120 decibel. This police car siren. You can see the sound levels in between, right? So beyond this qualifies for noise pollution. So if you hear sound consistently, okay, of this sound level, you may go deaf. तो जो loud music सुनते हैं जैसे rock concert या फिर jet plane produces even higher sound than this. So they will have some gears, okay, to protect the ears. Otherwise, they will go deep. ठीक है? तो ये है. So you should not expose your ears for a long duration to loud sound. Earphone लगा के loud music कितना लोग सुनते हैं आपने? क्यों? ये मतलब तो ज्यादा टाइम तक नहीं सुनना है, ज्यादा टाइम तक बहुत लाउड नहीं सुनना है, कुछ लोग मस्ती कर रहे हैं ना, टीवी का वॉल्यूम फुल किया और ऑन किया सडनली ब्लास्ट होता है, ऐसे करते पंखे छोटी नंबर है, तो जो नहीं करते वो बंद करने लगना आज के बाद. तो समझ आ गया what is the noise pollution? Anything greater than 120 और वो 120 को भी लीगली प्रोटेक्ट किया क्योंकि वो पुलिस की कार का सायरन, वो भी बहुत लाउड होता है. You cannot ignore that sound, right? It is so loud. लेकिन उसको लीगली प्रोटेक्ट किया हुआ है, वो नॉइस नहीं है, वो भी बहुत देर तक सुनोगे तो you may go, versal. ठीक है? So that's what it is. So this is all about sound and its measurements. तो इस पे कोई न्यूमेरिकल नहीं, ये फॉर्मूले पे कोई न्यूमेरिकल. Next is difference between music and noise. Did we do numericals on echo? वो हो गया पूरा? Which chapter is going on in school? Spectrum. So we are ahead only, right? Today we are going to start current electricity. Today, okay? Just after this.
what is music and what is noise? Music is sound which is pleasant to hear. Yes. बुलाया किसी ने? Music सुनना है किसी को? What is a musical sound which is pleasant to listen to? और noise कैसा होगा? Unpleasant. क्या हुआ? पहले गड़बड़ है. हाँ एग्जाम्पल हाँ बताओ. Yes, yes. So how do we export it? हाँ तो that is perception. क्योंकि रॉक म्यूजिक अगर किसी को पसंद नहीं है, but I am a rock fan, तो मेरे को बहुत लाउड पसंद है. But if you have like old people or somebody taste is not, he is not due to rock music. तो मुझे क्या शौक है? So it is perception based. Okay. So what is example of music? It is harmonious. What is harmonious? Meaning of harmony? It has a well-regulated pattern. मतलब कि ये musical sound, does it have unique frequency or mixture of frequencies? It is mixture of frequency. क्योंकि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं और सबका रिजल्टेंट साउंड से म्यूजिक कंपोज होता है. तो ये कैसा होगा? So it is superposition of many frequencies. It's not a plain sine wave. ठीक है? तो ये क्या हो गया? म्यूजिक हो गया. अभी नॉइज कैसा होगा यहाँ पे? So irregular pattern. Harmonious means periodic. What is irregular pattern? Like sound generated by traffic. Okay, कभी हॉर्न बज रहा है, कभी ब्रेक मार दिया, कभी कुछ हो रहा है. और ग्राइंडर इंडस्ट्री, साउंड कमिंग आउट ऑफ फैब्रिकेशन यूनिट. कभी विजिट किए फैब्रिकेटर का शॉप? वो लोग ब्लैक स्मिथ थोड़ा गाड़ी चालू रहती है, फिर कभी कुछ टूट गया, कभी कुछ गिर गया, है ना? सो देयर इज नो फिक्स्ड पैटर्न. तो वो साउंड कुछ भी हो सकता है. So it could be like इसमें कोई पैटर्न ही नहीं. So it is very irritating. So it's unpleasant. ठीक है? So harmony में rhythm होता है, rhythm. So that is like good to listen. Okay. So with this we are done with the sound chapter. Okay. And only important part is that the mid part, the B part, the different types of vibration. ये basic नहीं है. अरे ये वो harmonious और भी होगा. मतलब ये ना periodic नहीं है. ये ठीक है. ये सिंगल है. तो ये एक इंस्ट्रूमेंट फ्लूट है. ठीक है. लेकिन म्यूजिक यस ये सिंगल इंस्ट्रूमेंट है. यहाँ पे बहुत सारे हैं. Whenever the waveform is repeated, उसमें repeat नहीं हो रहा है. देखो ना, नॉइज में repeat हो रहा है, नहीं हो रहा है. ये ठीक है. So what is saying is book में म्यूजिक के लिए भी सिंगल दिया हुआ है. तो ठीक है, वो सिंगल मतलब एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट का साउंड, तो पीरियोडिक हो गया ना वो. हार्मोनियस पीरियोडिक साउंड होना.
पीरियोडिक का मतलब क्या होता है? सेम पैटर्न रिपीटिंग इटसेल्फ, ठीक है? ये भी पीरियोडिक हो गया तुम्हारा। कोई एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट करता हो, ठीक है, लेकिन उसको म्यूजिक नहीं बोलते, तो सोलो हो गया फिर। म्यूजिक में डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैव टू बी प्लेड टुगेदर, देन यू विल गेट अ रिजल्टेंट व्हिच विल बी हार्मोनियस, ठीक है? ओके, सो विल स्टार्ट विद नाउ current electricity. This is a single 2 hour class or we have a break? At what time? 25. So we still have time. So before I move on to current electricity, do you have any questions in this chapter? This is the last chance to ask any doubts from this chapter. Oh, without that? Huh? Any doubts from sounds? Last chance. Huh? I was one. I was in. Yes, I know many of, not only you, many of you. So, what you got opportunity between we both for the video link. ठीक है, वो करो फिर करेंगे। If you have doubts, so come up with doubts. Try to try to ask all your doubts in the class with me. Extra class or इसमें तो वो continue के लिए. Try to ask all the doubts. Get it clear. Yes. ओकर लो, उसके बाद भी अगर एक्स्ट्रा विद्वान तो लो मतलब नहीं करो, ठीक है? But try to ask. So next. Okay, let us start current electricity. You have done questions from this chapter sound हो गया ना, या कुछ बाकी है इसके अंदर? ये बस ठीक है, तो बाकी तो थ्योरी है, वो तुम समझ जाओ, ठीक है? वी ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट. ओके, लेट्स स्टार्ट विद करंट इलेक्ट्रिसिटी. चैप्टर 8. So first topic is, let's understand the concept of charge. We have studied about charge in 9th standard also. What is a charge? Huh? Flow of electron or electron itself is a charge. So charge is something because of which two bodies attract each other. Okay? There is some other attractive force that you are familiar with. What is that? Magnetic force. There is gravity. Then what is the forces between charge? Electrostatic force. Okay? So there are different types of forces in nature. So charge is the property which is responsible for electrostatic force. Okay? Just like mass is responsible for gravitational force. Okay? So charge is the property. For electrostatic force.
ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज को तुम कोई प्रॉपर्टी मान लो, उसका कहीं पे भी ठीक से डेफिनेशन मिलने वाला नहीं है। ठीक है, जैसे मास क्या है, मास इज मैटर कंटेंट। ठीक है, मास इज मैटर कंटेंट। वैसे चार्ज क्या है, सम प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ which is the reason for electrostatic forces different types of. ठीक है, now how is electrostatic force different than the gravitational force? It is both attractive and repulsive, whereas gravitational force is always attractive. ठीक है, तो ये चार्ज के फोर्स का डिफरेंस है। अगर यहाँ पे चार्ज तो इसमें ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है और ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, इसमें भी एफी लग रहा है, इसमें भी एफी। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ रिएक्शन, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे अगर ऐसा होता तो ये रिपल्सिव फोर्स हो गया। ठीक है, तो इन नेचर बॉडीज आर न्यूट्रल। फ्री स्टेट में कोई भी एटम, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ मैटर? एटम, है ना? Smallest particle of any element is atom, and atom is always electrically neutral. So atom is the basic atom, basic unit of any substance. बेसिक यूनिट एटम जो है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। मतलब क्या, क्या उसमें चार्ज नहीं होता है? बेसिक यूनिट एटम में क्या चार्ज नहीं होता है? होता है, ठीक है, लेकिन इक्वल नंबर में होता है, तो नेट चार्ज जीरो। ठीक है, व्हाट डज इट मीन? दैट इज इट हैज इक्वल नंबर ऑफ negative charges and positive charges. That is net charge zero. So is atom the basic unit? No, it has subatomic particles. Electron, proton and neutron. उसमें से electron is, convention is electron carries negative charge and proton carries positive. ऐसा कुछ nature में plus minus नहीं लिखता है. We have adopted that convention. That electron carries negative charge, proton carries equal amount of positive charge. Quark is another subatomic particle. अरे quark नहीं, springs पे जाता है. They will teach you जब तुम्हारी औकात हो जाएगी वो पार्टिकल फिजिक्स का है, अभी तुम एटम तक मिलो है। ठीक है, औकात means when you are eligible to understand. That's a crude language, very easily understood by English. अभी in short कुछ समझने लायक होते हैं। ठीक है, that is the subject of high energy particle. तो अभी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर खेलो। Next. And so then what are charged bodies? अब हमने बोला electric source acts between charged bodies. ठीक है, charged bodies कैसे बनेगा? अब ये charged है क्या ये charged है? क्या इसमें charges हैं? Here the question carefully. Is it charged or does it have charges? What is the correct statement? Right now, is it charged? No. But if I rub it on my head, will it become charged? Okay.
it is right now when it is neutral. Default state is neutral. That is the equilibrium state. Nature में any substance by default remains in equilibrium. ठीक है? Like mental state भी by default अगर if nobody bothers you, you are in a blissful state. आनंद ही आनंद. ठीक है? फिर मम्मी ने आके बोल दिया कुछ. हो गया equilibrium disturbed. रोना सब चालू. So that is disturbed equilibrium. तो फिर से क्या वो डिस्टर्ब रहता हमेशा? नहीं. नेचुरल स्टेट इज इक्विलिब्रियम. फिर से तुम एनर्जी रिलीज करके वो एनर्जी चेंज हो जाती है वहां पे, है ना, डिस्टर्ब स्टेट. सो लीस्ट एनर्जी स्टेट इज इक्विलिब्रियम स्टेट. आइदर व्हेन द एनर्जी इज पम्प्ड इनटू यू, या तुम्हारा एनर्जी निकाल ली, तुमको भूख लगी है, वो भी एक नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट है. वैसे ही इसका इक्विलिब्रियम स्टेट क्या है? नेट चार्ज जीरो, मीनिंग इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस. ठीक है? तो अब अगर हमने हाइड्रोजन ले लिया, सबसे छोटा आइटम क्या है? हाइड्रोजन. कितना इलेक्ट्रॉन और कितना प्रोटॉन है उसके अंदर? 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन, ऐसा हमने माना है. तो नेट चार्ज क्या हो गया? जीरो. वैसे ही अभी तुमने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को डिफाइन करने के लिए हम एक पेयर ऑफ मटेरियल लेते हैं. ग्लास रॉड है, सिल्क क्लॉथ. ठीक है? ग्लास रॉड के ऊपर अगर तुम ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ पे रब करोगे, तो जो चार्ज इस पे आता है, क्या होता है? इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के सिल्क क्लॉथ पे चला जाए. अब इलेक्ट्रॉन किससे जुड़ा हुआ है? न्यूक्लियस से, है ना? देखो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फिजिकल इंटरेक्शन क्या होता है? एक सब्सटेंस में प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पे भी एक प्लस एक माइनस है. मान लो ये सिल्क है और ये तुम्हारा ग्लास रॉड. When the glass rod is rubbed here, अब क्या होता है? इसमें से दो इलेक्ट्रॉन इधर जंप कर जाएंगे. ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या हो गया? इट इज एक्सेस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स. एंड यहाँ पे क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी. ग्लास रॉड रब करने से पहले क्या था? इक्वल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज था. ठीक है? लेकिन रब करने के बाद क्या हुआ? जो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन था वो दूसरे सब्सटेंस पे चला गया. तो अब चार्ज इक्विलिब्रियम है कि डिस्टर्ब हो गया? डिस्टर्ब हो गया. कैसे डिस्टर्ब हुआ? फ्रिक्शन से. ठीक है? सो वी हैव नाउ क्रिएटेड चार्ज बॉडीज. ये कैसा हो गया? एक्सेस नेगेटिव चार्ज हो गया. तो ये हो गया नेगेटिवली चार्ज. क्या हो गया? नेगेटिवली चार्ज. और ये क्या हो गया? पॉजिटिवली चार्ज. किसको पॉजिटिवली चार्ज बोलेंगे, किसको नेगेटिवली चार्ज बोलेंगे? जिसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसको बोलेंगे नेगेटिवली चार्ज. जिसके पास डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसको बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज. अपने आप बन गया वो चार्ज बॉडी? नहीं, हमको क्या करना पड़ा? वर्क करना पड़ा. तो मैकेनिकल एनर्जी गॉट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी नाउ. बात समझ में आई? नाउ वी हैव 2 चार्ज बॉडीज. Is it capable of working now? Is it capable of working? Why are we saying that charged bodies have ability to do electrical work? अब यहाँ पे तुमने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया. अब तो ये तुम्हारा पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज है. तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को फोर्स लगा के डिस्प्लेस करेगा. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क डन. You understand? So first we created 2 differently charged bodies. Now it is capable of doing work. यही तुम्हारा सेल होता है. सेल में क्या होता है? एक पे पॉजिटिवली चार्ज, मतलब पॉजिटिवली चार्ज एक्सेस होता है, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज एक्सेस होता है. जिसपे पॉजिटिव चार्ज एक्सेस होता है उसको बोलते हैं हाई पोटेंशियल. क्या बोलते हैं? हाई पोटेंशियल. और जिसपे नेगेटिव चार्ज का डिपॉजिट होता है उसको क्या बोलते हैं? लो पोटेंशियल. दोनों में क्या आ गया? पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस मतलब स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी. अब जैसे मास को ऊपर उठाया तो इसमें क्या हो गया? स्टोर्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल.
So it is hammer. When you lifted the hammer, it has stored gravitational potential energy. Now when you drop it, then it drives the nail into the hole. So it is whenever you have any potential energy, that means you have ability to work. Okay, वैसे ही whenever you separate charges, now it has ability to do electrical work. तो इसमें खाली एनर्जी चेंज हो गया, एनर्जी which is doing work. Now here is electrical energy. हैमर के केस में तो मैकेनिकल एनर्जी. अंडरस्टूड? समझ आ गया? यही पढ़ना है अपना को करंट इलेक्ट्रिसिटी. अब जो चार्ज मूव हो रहा है उसी को करंट बोलते हैं. तो हमें क्या चाहिए करंट के लिए? पहले तो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए विच इज सेल और बैटरी. अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी के सोर्सेज भी अलग अलग होते हैं, डीसी एंड एसी. तो बैटरी या सेल होता है वो डीसी सोर्स होता है. तो उसमें हमने क्या बनाया है, अब यहाँ तो मैंने चार्जिंग ऐसे किया, मैकेनिकल एनर्जी से मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट किया. चार्ज बॉडी बनाया मतलब मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट किया. सेल में क्या हो रहा है, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल. जो उसमें इलेक्ट्रोड डाला है, केमिकल रिएक्शन होता है इलेक्ट्रोलाइट के साथ. तो एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और एक नेगेटिवली चार्ज हो जाता है. अब उसको बाहर से जब हम कंडक्टर लगा के इलेक्ट्रिकल लोड लगाएंगे, समझो बल्ब, तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा. यहाँ पे नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट ज्यादा है, वहां से कंडक्टर के थ्रू, डिवाइस के थ्रू पुल करेगा पॉजिटिव पे, तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा. जैसे ये न्यूट्रलाइज हो फिर केमिकल रिएक्शन हो. तो केमिकल रिएक्शन करके दोनों इलेक्ट्रोड पे पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करेगा, मेंटेन करेगा. समझ आया? क्योंकि जैसे जैसे करंट ड्रॉ करोगे चार्ज न्यूट्रलाइज होते जाएगा इलेक्ट्रोड पे, तो फिर से केमिकल रिएक्ट करके फिर डिपॉजिट कर देगा. तो जब तक तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट केमिकली एक्टिव है तब तक सेल इज यूजेबल. जैसे ही वो केमिकल रिएक्शन बंद हो जाएगा, ये चार्ज डिपॉजिट होना बंद हो जाएगा, देन यू हैव टू रिप्लेस दिस. समझे? तो ऐसे फंक्शन होता है. तो अब हमको समझना है क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज समझ में आ गया, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी समझ में आ गया. तो इलेक्ट्रिक सेल है, तो इलेक्ट्रिक सेल में कैसे चार्ज बन रहा है, फ्रिक्शनल नहीं बन रहा है, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ठीक है? सो देयर आर मेनी वेज ऑफ क्रिएटिंग और बिल्डिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स. तो वहां पे हमारे पास जो घर में आ रहा है ये कैसा कैसे टाइप का पोटेंशियल डिफरेंस है, एसी है, ऑल्टरनेटिंग. लेकिन हमको अभी क्या सीखना है, डीसी. डीसी क्या है, सेल और बैटरी. ठीक है, अभी आगे कंटिन्यू करो. शॉर्ट ब्रेक 5 मिनट्स.